वेरी इंटरेस्टिंग, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है? मनी सप्लाई, इट रेफर्स टू द टोटल वॉल्यूम of money held by the public at a particular point of time in an economy. It is measured at a particular point of time, so it is a stock concept. Particular point of time की वजह से it becomes a stock concept. National income में क्वेश्चन आता है, stock concept, flow concept. Something which is measured at a particular point of time is a stock concept. So money supply is a stock concept. Flow क्या था? Which is measured over a period of time. Income, national income, imports, exports for the year होते थे. Okay, features of money supply. It includes money held by the public only. The term public signifies money using sector, that is individuals and business firms. It does not include money creating sector, the government and the banking system, as cash balances held by them do not come into actual circulation in the country. Money held by the public only. Money held by the public only. Money using sector. Government, it does not include money held by the government or the banking system. It is a stock concept. That is, it is concerned with a particular point of time. Meaning of money supply. It refers to total volume of money held by public at a particular point of time. The money may be held by the public in the form of currency or deposits with the bank. But जो बैंक आपके balances है उनकी बात हो रही है. गवर्नमेंट के भी तो बैलेंसेस हो सकते हैं, यस और नो? यस सर। कमर्शियल बैंक्स के भी अपने रिजर्व्स हो सकते हैं, अपने बैलेंसेस हो सकते हैं. कह रहे नहीं, उन सब की बात नहीं हो रही. करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स एंड नोट्स, इट मे बी मनी, मे बी इन द फॉर्म ऑफ योर डिपॉजिट्स विद द बैंक्स. तो क्या क्या आता है मेजर्स मनी सप्लाई में? तो कह रहे ये तो फिर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेजर पूछ रहे हो. तो देयर आर डिफरेंट मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई. अभी हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ मनी सप्लाई.